Good morning, everyone. Okay. आज कम स्टूडेंट्स आए हैं only 10. Okay. So let's begin. So hopefully we'll complete this and we'll complete merge part as well. ठीक है. So आपने while you executed this code, any sort of confusion or any sort of question you might have come across, any error that is still pending on your side and you are not able to solve it, anything such? Okay, good to know then. Um, Okay, then हमने कल किया था we saw pandas visualization we हमने ग्राफ बनाए multiple kind of and we did group by. So group by में like we saw कि how can we group by single value, multiple values, and how we can see multiple outputs altogether by using aggregation function, or we can define our own. My voice is not clear. Is it for everyone that my voice is not clear? It's low. Okay. Um, are some connected via my phone. तो आज I'll try to be a bit louder. So maybe it helps. Okay, तो आज हम start करेंगे. We'll start with filling the values. For example, अभी हमारे पास null value नहीं है. तो let's do this part कि I'm asking you to do this. So pick any column of your choice: beer serving, spirit serving, or wine serving, or total rate of pure alcohol, and fill it with the mean value of that respective column. ठीक है, नॉन वैल्यूज नहीं है, लेकिन अज्यूमिंग दीज आर द नॉन वैल्यूज, बट नो व्हाई टू अज्यूम. सो अभी के लिए instead of I don't want zero in my beer servings column or any other column, I want that if the column you have taken is total liters of pure alcohol, then zero should be replaced with the mean value of this particular column, because all are what integer, so mean can be taken out. So I don't want any zero into any of the column integer values. ठीक है. So अभी इसमें we don't have non values, so but yeah I function वही लगेगा, but yeah for now make it for 0. Okay. Okay, and also if I say कि मुझे इस 25 की जगह okay, पहले आप ये कीजिए पहले. Yes, pick up any column of your choice: beer serving, spirit serving, wine serving. या फिर you can do something कि सभी column automatically pick up हो जाए, and all we don't have, हमारे पास zero ना बचे, so instead of zero we put up mean of that particular column. Clear the question? What will you have to do? आकाश, आपको क्लियर हुआ? Only zero part.
प्रेम हार्ड कोड मत कीजिए वैल्यूज को, जस्ट यू डिड 4 to 0, so don't do hard coding. um ठीक है अनुषा, but we have a direct command for this one. um no, why to take new data frame prem? Only this one is sufficient. तो हार्ड कोड से मेरा मतलब है जो आपने एक्सप्लिसिटली 402 वैल्यू दी है, सो आपने कहाँ से निकाली है? पुट दैट कमांड इनटू द प्लेस वेयर यू हैव रिटन 402, सो दैट अगर वो वैल्यू चेंज भी होती है देन इट ऑटोमेटिकली गोज इनटू द कमांड, आपको चेंज ना करनी पड़े बार बार. हाँ जी, और किसी का हुआ? सिंटेक्स एरर? लेट मी सी. हाँ जी, अब ठीक है अनुषा. ओके, कोमल, इसमें आप क्या निकाल रहे हो? एक्स डॉट मीन, राइट? एंड व्हाट इज एक्स हियर? आप किस पे आइटरेट कर रहे हो? कॉलम पे, यूजिंग लेमडा फंक्शन. एंड आइटरेशन करते टाइम जो कॉलम की वैल्यूज हैं 89, 25, 245, वो किस में जाके स्टोर हो रही है? एक्स में. सो कैन वी टेक आउट द मीन ऑफ दैट सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज एक्स एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें इट इज स्टोरिंग योर वैल्यूज. एंड उसी वेरिएबल से आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर किसी पॉइंट पे वो वैल्यू 0 के इक्वल है तो दिस शुड हैपन. सो वैल्यू का मीन नहीं निकल सकता, मीन निकलेगा कॉलम का. बट x इज योर वैल्यू हियर, दैट इज व्हाई इट इज थ्रोइंग यू एरर. ठीक है कोमल? ओके. Prem, why have you put this 0 into square bracket as in the form of list? वो मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ 0 लिखिए, देन ऑल्सो इट विल वर्क. प्रेम, अनुषा आपका सही आंसर आ रहा है ना? आई डोंट फाइंड any syntax error into yours. Are you getting the correct answer, Anisha? Krishna, Naveen, Sonia, Arzu, Aman, Akash,
आप भी प्लीज शेयर सोल्यूशन। हार्दिक। आकाश आपका हुआ? या ये जस्ट जॉइन महिमा, ऐसा कोई बात नहीं। ओके। Aman, is it not giving you syntax error? Simple mean, because you have not called mean function properly. So ideally it should throw, क्योंकि mean के बाद open close bracket होते हैं, which are missing into yours. आकाश आपका हुआ? हार्दिक, आरजू, सोनिया, yeah. Okay, let me discuss. So the command is simple replace functionality here. So the column onto which I want to make the replacement for, and dot replace functionality, and then 0, क्योंकि मुझे ये वैल्यू रिप्लेस करानी है, एग्जिस्टिंग वैल्यू विल कम फर्स्ट, फॉलोड बाय जिस वैल्यू से रिप्लेस करानी है, द मीन वैल्यू। ठीक है, सो हियर 0 will be replaced by what? The mean value of this particular column, beer servings, and then we have overwritten this column of beer servings. हाँ जी, अब ठीक है अमन, क्योंकि वो ओपन क्लोज ब्रैकेट मैंडेटरी है, अदरवाइज फंक्शन कॉल नहीं होगा प्रॉपर्ली। ओके। ऑल्सो लेमडा फंक्शन में, अच्छा या इट वाज हैविंग एरर। कोमल, कोमल आपका एग्जीक्यूट हो गया। Also, if for example, if I want to change this particular value, still error, what is the error you're getting? वो lambda function में आपको hard code value देनी पड़ेगी, और you just have to put up this particular value over there, because इसी से mean निकलेगा, and it might throw you error that df or beer servings is unidentified. Now another thing, if I just want to only make a replacement for जैसे spirit serving में I'm having 132 here. So spirit serving में मुझे सिर्फ एक ही 132 की जगह I want any value. The main thing is here, just are you able to access this 132 and put a new value, say 132, 131. So 132 की जगह I have to put 131. ऐसे करते नहीं है, but are you able to access it? Can you access 132 and change the particular value at this point? If I want to access this 132 only and change it to 131, so how will I do it? हाँ जी, ठीक है निशा। सोनिया आपका हुआ? सोनिया, आर यू हियर? हाँ जी, आप सोल्यूशन से शेयर कीजिए सोनिया। आरजू, आर यू हियर? हार्दिक, हाँ वो लेमडा से नहीं होगा सोनिया, वो रिप्लेस फंक्शनैलिटी से होगा। ओके आरजू, आप आर यू एबल टू डू आरजू? आकाश आपका हो रहा है? आकाश, ओके ओके ठीक है आरजू। आकाश आपका हुआ? आकाश गुप्ता। नो नवीन, सीधी सीधी कमांड है।
ठीक है, solution is okay, but we have a more direct approach for a single value. Komal, the answer is correct, but we have a more direct approach. So replace will work, everyone, replace चल जाएगा, but try using something else because replace में generally multiple values, so सीधा एक ही value pick करानी है, तो replace की जगह try something else. अब यहाँ पे पूरे रो में जितना भी 130, जहां पे भी 132 होगा, रिप्लेस कमांड सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये एक इंस्टेंस को रिप्लेस कराना है, बाकी नहीं कराने. रिप्लेस देन फेल्स क्योंकि रिप्लेस विल लुक फॉर एंटायर कॉलम and make changes everywhere. Okay. नवीन, आपका हो रहा है नवीन? अच्छा, you have just shared. Okay. हाँ जी, नवीन and Komal, um, do something else apart from replace. हाँ जी, what about others? Only Anusha has given me the answer. What about others? मुझे सिर्फ एक वैल्यू रिप्लेस करानी है, सिर्फ 132, which is at row number 1 and into column spirit serving. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं महिमा. नो, नॉट टू यूज रिप्लेस कमांड. अच्छा, वो पहले वाले का. ठीक है आरजू. यस कोमल. आरजू सिंटेक्स ठीक है, बस लास्ट में आपका एक जो स्लैश आ गया ना, उस वजह से आपका एरर आ रहा होगा. एंड ओके, you are replacing what with 0 with mean. Are you doing this question or the previous question, Arzu? Then this is wrong. Then this is wrong. आप you cannot access the particular value 132 ऐसे ही. It's wrong. Syntax error आ रहा होगा आपका. अभी फिर आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है आरजू into this value. Yes. Okay, कोई बात नहीं. Try. Else we'll discuss the solution. हाँ जी, we did lock ilock. Lock ilock से what we were able to do. हाँ जी, ठीक है अंशुल. इक्वल्स टू भी डालिए अंशुल. वैल्यू पिक आपने की है एंड जो नई वैल्यू आपको चाहिए, पुट इट इक्वल टू जो कमांड आपने दी, इसके इक्वल टू में पुट दैट न्यू वैल्यू. हाँ जी, लॉक आई लॉक यूज करके कैन वी डू. इफ वी डू दिस थिंग ऑल्सो, कि मुझे वैल्यू कौन सी चेंज करानी थी, लेट्स से not 0, let me put 1 here. So and also not on to let me bring wine servings here. मुझे wine servings की जो वैल्यू है 132, I want to replace it with also, not just let it be with mean. Let me put one custom number 131. ठीक है, मुझे इससे रिप्लेस कराना. सो हम लॉक आई लॉक कैन वी यूज. लॉक आई लॉक से क्या होता था, वी जस्ट हैव टू गिव इंडेक्स नंबर एंड द कॉलम नेम. आरजू, जो आपके में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था बिकॉज यू हैवंट यूज्ड लॉक.
आपने सीधा क्या किया, यहाँ से सीधा स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया विदाउट यूजिंग लॉग कमांड, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट पिकिंग अप द वैल्यू। सो सीधा हमने लॉग यूज करके यहाँ पे नेम दिया। अगर आई लॉग यूज करोगे देन यू हैव टू गिव द इंडेक्स नंबर फॉर वाइन सर्विस कॉलम। Then what this command did, it picked up this value, and then we have assigned a new value to this. So instead of 132, we want 131. So when I execute this command, you see instead of 132, I'm having 131 now. So जब एक कोई single value आपने change करनी है तो don't go with replace functionality, because what replace will do is it will look for all the values। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रिप्लेस कराओगे देन वो जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उस वैल्यू के एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड। बट विद दिस पर्टिकुलर कमांड यू आर जस्ट स्पेसिफाइंग दैट ओनली फॉर दिस रो एंड ओनली फॉर दिस कॉलम। सो आप सिर्फ एक वैल्यू को बोल रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड as compared to अगर if they are more with the same value। Okay, any confusion into this one? We have done it, रिवाइज नहीं किया आपने। So any confusion here? Yes, this is permanent. If I just make it into other cell as well, df dot head, again I'm having 131. Because हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल असाइनमेंट कर रहे हैं, एंड वेरिएबल ऐसे असाइन करने से चेंज गेट परमानेंट। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, रिवाइज क्या करो, इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सो मोस्टली हमारी data frame वाली commands हो गई हैं, so you were all able to replace the value, you were all some of you were able to change the value from 130 to 131। आपको type conversion आ गया for values and for particular column using lambda function as well and using as type। तो pretty much of hands on we have done on to that। हाँ, no सोनिया, इसमें log use कीजिए। without log how will it identify कि आप किस चीज को access कर रहे हो? ठीक है, then yeah, we are done with that। So अभी हमारा next topic है pandas में binning। binning क्या करेगा? So is everyone done so far? Is still someone doing any code जो कि is related to the wine data set? Because and then I'm starting a new topic here from pandas। हाँ जी कोमल। What are multi indexes? जैसे हमने कल ग्रुप बाय किया था, we did group by for yeah, this kind of scenarios are called multi indexes where you have two indexes। अब जो ये resultant data frame है, you are having two index। First is your Africa and into Africa you have country, and then you just have only one column। So this is an example of multi-index। Then there are specific commands for that। Generally हम multi-index we do not tend to define, we get it when we define group by, but उसके लिए then we have different command df dot multi-index and so on। उसके लिए फिर other specific commands होती हैं proper। अभी के लिए आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट कंटेंट, बट या ठीक है, आई वुड लाइक एक बार खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए एंड मीनवाइल आई विल कम अप विद द कंटेंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ओके, okay, coming on to pandas binning here। So अब we won't be working with this wine data set, अब हम binning करेंगे। So binning is what when you want to create categories। For example,
Give me a second. Let me just take another example. Was it here? Give me a second, guys. No, it's not into this file. Let me just open that file where we are. Where is that gone? Just another second. Okay, I've got. Okay, so this is binning and bucketing here. Let me send this data to all of you. So create a data frame and just see that if you have any confusion into this command. So here I've defined a dictionary having name and score. Okay. Then I've used this dictionary to create a data frame. So just list of names here and the list of respective scores for each person. And is everyone able to define the data frame? Data frame कैसे बना, इसमें any confusion? Okay. Now the topic is binning here, also known as bucketing. So what we do here, जैसे in the realistic scenarios, if we come to the grading part, so हम grades देते हैं on the basis of what? For example, on the basis of score. So we can say a student or a person having score less than, if talking about a scale of 100. So if a student is having score above 80 or above 70, then grade A student, between 50 to 70 or 40 to 70, grade B student, and below 40, the grade C student. So हमने क्या किया? We had multiple values and a range of values. So उसमें हमारी continuous value थी 75 भी हो सकती है, 76, 78, 79. So हमने क्या we made a bucket for all those specific values. हमने individual value को ना consider करके we just set up a threshold कि इसे like all these value जितने भी students का इस range में marks lie करेगा, so we have made a bucket, so that is grade A, grade B and grade C. So same thing we'll be doing here. This thing can be applied using मतलब loops लगा के भी हो सकती है, but
there is a predefined function here which is dot cut. So this process is called binning, wherein you will define your own bucket. You will tell these students I want to have in range into B, for them I want to have a range of C, and for them I want to have a range of A. तो हम ऐसे यहाँ पे will create our own buckets and those bucket will be as per the data values. ठीक है, but उसके लिए two things are mandatory. You should know, अब students को divide करने से पहले we should know कि what is the minimum value, कि कहाँ से value शुरू, जैसे for example 80 से लेके 100 और 70 से लेके 100. What is the minimum threshold we have taken? 70. And what is the maximum threshold we have taken? 100. So 70 से 100 is our grade A. तो हमने एक limit define की ना, starting point and ending point. So similarly that kind of limit we will decide here as well. So we will say कि from this value to this value, this is my category. From value 1 to value end value 1, then that is our second category. So categories को generally here we have to always define it in the form of list. So here I've defined this is my category 1, 0 to 25, category 2, 25 to 50, third category at an interval of 25 I've taken this category. So 50 to 75 is my category 3 and followed by category 4, that is 75 to 100. Okay, now this is my values. Ki I want the scores to be cut or to be distributed as per these ranges. Yeah, this step is mandatory. You need to have a range key starting from what value and ending at what value. This is mandatory. Iske bina you cannot perform the binning part. Okay, so once I've defined the bins here, you can give any name. I've given bins, so it's just a variable name. You can have your own variable name, won't make any difference. Okay, now coming up here, so हमने यहाँ पे क्या execute किया? What was our data frame named? DFB, and this is my predefined list. कि I want to cut the scores on the basis of this list. So this is my starting point and ending point. So मैंने यहाँ पे how many buckets do I have now? What is the total number of buckets into my bins column? How many categories? ठीक है, 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4. So जितने भी मेरे scores होंगे ये 4 categories में divide हो जाएंगे. So वो कैसे होंगे? So the command for that is pd.cut. pd is our regular pandas and dot cut is the function which is specifically will do कि आपके जो bins हैं उनको किस पे apply करेगा? Score वाले column पे, and you get a new column by assigning the output here. So what I've done here, I've called pandas.cut function. Then into brackets will come कि you want to apply it onto what? So pd.cut open close bracket, then पहला होगा किस column पे you want to apply it. So I want to apply it onto what? Score column. So मैंने यहाँ पे अपना column specify किया. And then where are your bins coming from? So bins, this particular is your variable name. Sorry, parameter जो होता है pd.cut का, ये predefined name है. इसको you cannot change क्योंकि bins रहेगा यहाँ पे. You can change this name. So यहाँ पे if you are saying bins underscore 1, then put underscore 1 here. Then this is your variable name here on the right hand side, but this is your parameter name. This cannot be changed. You can change this particular value. So I've defined pandas.cut function and applied onto my score column of my data frame and make categories on the basis of the list. जिसको हमने बोला bins underscore 1, उस list के basis पे make categories from the score column and save it into what? DFB binned. ठीक है, so हमने यहाँ पे categories को cut, data score को cut किया on the basis of this list and on the basis of 4 classes which we have defined, and we have made a new column for that, that is DFB and binned column. So this is the resultant output here. Now you see, I'll explain the output. Key output may what are the result, what are the brackets referring to. But meanwhile, any confusion into this command before getting to the output part? The purpose for this is, for example, अभी जैसे यही scenario लगा लीजिए, you having a data, big data enough,
and you don't want to work with the scores, then and you want to make a categories for some purpose, you don't want to work with real data, you have to make categories for that. So how do you make it? Either you use lambda function or आप if else condition लगाएंगे, or you simply use this pd.cut function. Okay. It can divide integer column only, yes, क्योंकि range होगी जो integer column पे ही applicable होगी, onto like अलग values पे नहीं आएगी. Text के लिए how will define the range? So it's only for integer values. Why? I'll come to that. अभी मैंने बोला I'll come to the output part. Command me into the command any sort of confusion here, then I'll explain the output. Okay. So here अभी हमारा starting point क्या था? पहली bucket कौन सी थी? 0 से लेके 25. 0 से 25. What is my lower range? 0. And what is my upper range? 25. So ideally जो मेरी value 0 से लेके range में है, scores, they should lie into this category. Now let's see any value. So we have mostly lower category में do we have? Yeah. So we have two values here. One is this value and one is this value which belongs to this category. So now you see कि एक तरफ तो you are finding the round bracket and एक तरफ you are having the square bracket, right, into your binned column, क्योंकि जो अभी हमने create किया है using pd.cut. And जबकि 0 was into our category, लेकिन we still have a nan value. Nan का मतलब यहाँ पे है that this value, there is no category defined for this particular value. Although we defined a category, but we have got a nan. There is a rule for this. जब हम pd.cut करेंगे, by default, your lower range will be excluded and your upper range will be included. So अभी इसमें मेरी lower range क्या थी? 0. So that has been excluded. So what I've gotten here? Nan. क्योंकि lower range को by default consider नहीं किया जाता. So it means it is not considered. It means we do not have anything defined for the value 0. कोई 0 से और below हमने कोई category नहीं define की. So that is why we have gotten nan here, because explicitly the very first category of ours was 0 से लेके 25 and इसमें lower value क्या हो गई? Exclude हो गई. तो 0 क्या हो गया? हर category से बाहर हो गया. So there is nothing defined for 0 as per our list of bins. Then we have gotten a nan here. Whereas जो 25 था upper bound value or the upper circuit value is included. So अभी यहाँ पे क्या आ गया? We have been able to see that this 25 belongs to this particular bin. So जहाँ पे भी square bracket है, it means it is included, and wherever you find a round bracket, it means it is excluded. तो lower वाली value include नहीं होगी, upper वाली value exclude हो जाएगी. Now the second circuit was 25 से लेके 50. So any confusion into this कि why have we gotten 0 for nan? Sorry, nan for 0 and 25 for this. ये clear हुआ? By default है अमन. By default it is defined such way कि lower bound is not included and upper is included. ठीक है. Now the next one is here. अभी हमारा second circuit था 25 से लेके 50. So what will be included here? Only 50 is going to be included. 25 exclude होगा. So that is why when the value is 25 से लेके 25 is on the lower circuit and 50 is on my outer circuit. So this value is to be included and this value will be excluded. So यहाँ पे where I was having 25, you see I am not able to see this particular bin. मेरे को कौन से bin visible है? 0 से लेके 25, जो कि all the 25 इस कैटेगरी में भी लाई कर सकता था और इस कैटेगरी में भी लाई कर सकता था. इस कैटेगरी में कब लाई करता? जब मेरा lower value was included, but by default the lower value is excluded. So that is why 25 score went into which category? 0 से लेके 25. And value between 20 से 50 are 32, belongs to this category, and we don't have any. So and also we have 50. So अब 50 के लिए 25 के लिए तो category A define हो गई, लेकिन 50 के लिए
this category is allowed क्योंकि the upper bound is included. So 50 include था, तो जहां पे भी I'm having 50, I'm having this particular bin defined. Can we give negative range categories? Yes, you can give any range here. So let's come to that as well. So if I say -5 से, so -5 to 0, 0 से 25. So let's define. So what it came out to be, जब हमने एक और category define की, so we defined a one more lower range. So we took -5 as our starting point. So any value which is above -5 and till the 0, so will be into this category. See, इस मतलब अब आपके पास कहीं पे डेटा फ्रेम में -5 होगी, then उसके लिए you will have nan, because then -5 is your lower bound. So by default इसमें जो आपका lowest value होगा, initially we were having 0, so we got nan for 0. Now we are having -5. So if into the data we have -5, then we will get a nan value for this -5. So lower value by default will always have a nan when we use pd.cut using default functionalities. Okay. So any confusion into this output, that how did we got? So square bracket, the next range is now 50 से लेके 75, right? Or last, let's talk about 75 से लेके 100. So ideally, to which category 75 should belong to? If I'm having a score of 75, to which bin will the 75 score belong to? ठीक है. If the score is 75, 50 से 75, ठीक है. So the range will be 50 to 75. So where we have 75 here, 50 to 75. We have one more 75, 50 to 75. And if we are having 100, this is also included in the bin of 75 से लेके 100, क्योंकि upper value is included. तो 100 आ गया 75 से 100 वाली range में, whereas 75 lower value था, so it came into the range of 50 to 75. So square brackets means this value is taken into consideration, and round में means it is ignored. The lower bound is ignored by default. Okay. Any confusion here into the by default working of pd.cut? अभी हम by default parameters के साथ चले हैं. We can change these parameters, but for now with default. Okay. Can we? हाँ जी, अभी वो next step है हमारा, अमन. अभी next step पे we'll giving the names to these categories. अभी हम names का देंगे, so step by step. ठीक है. So now if I want to give the name to the categories, just initially we had a discussion that 75 and above grade A, 0 to 25 grade B, and so on. So it's float in positive values and integer in negative values. Yeah, output does not matter even if it is integer. See, हम ये वाली bin floating value and integer value, it does not make much difference here because we generally do not look for these values. चाहे integer में है, float में है, end of the day we create a label for these values. तो label को हम consider करते हैं because we will never put these values even in a condition. हम label पे जाएंगे जो भी हम create करेंगे. So even if your output is in float, if your output is in integer, does not matter. Okay. Now we had defined our bins. So what if I want to give a name? So assigning label to each bin. So now instead of the bin here, our label will be there. For example, and also one more thing here, your एक second. How many values do we have? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 values for into the bins. So your label will have one less than that. So your label will have always 4. अगर यहाँ पे आपके bins 6 होते, then your label will be 5. So it will be always one less than, because यहाँ पे this is one category, 0 से 25, which will be my class A. 50 से लेके 100 will be my class B. 50 से 75 will be my class C. And then 75 से लेके 100 will be my class D. So automatically, because pairing हो रही है, तो the label will be always one less than the number of values you have defined in your bin. So इसकी length हमेशा एक कम होगी. Okay.
So here these are my bin values 0 से लेके 100 and I have defined the respective classes. As per इसमें order matter करेगा कि अगर पहली वैल्यू आपकी 0 से 25 है, then जो आप पहले define करोगे label, that will be assigned to this very first bin. ऐसे नहीं है कि अगर मैं यहाँ 0 से 25 देती हूँ and I'm putting a class D at the end, so I want class D to be assigned for 0 से 25. No, order matters here. The very first bin category defined will take the very first label defined here. So you have to be careful that they are followed in a particular order. So now 0 to 25 is what? Class A. And this is my class D as per what I have defined. These are called, and this is again a variable name. You can give any name here. Not mandatorily that you have to give label. You can give any name here. Okay. Now again we'll be using that command pd.cut onto the column which I want to apply this binning. Okay. Values, that what are my threshold values for the bins which I want to define will come here, and then the label parameter comes in. So again, the left hand side is the name of your by default parameter, and this is the name of your variable. So you can give any name here, labels underscore one or any value, but this on the LHS will be same because a parameter ka name is just like it was in the case of bins. So you cannot change the name of the LHS. You just can give any predefined name of yours on the RHS. So this is the command. बस एक और parameter add हो गया labels के नाम से. Also, we have to define a list of label, and then we have to include this within the labels. ठीक है? So any confusion into the command part here? आप इसको वो मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन के लिए डाला था, आप अभी भी लिख सकते हो. सी पैरामीटर का नेम देना मैंडेटरी नहीं होता. दिस वाज फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो इफ यू आर क्लियर देन यू कैन रिमूव इट, बट इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप. जैसे यहाँ पे मैंने वो रखा था सो एज टू टेल की बिन्स हम किस में दे रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं देती एंड आई जस्ट गिव अ वेरिएबल नेम बिन्स अंडरस्कोर 1, देन इट विल थ्रो मी एरर. सो दैट वाज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि we have a parameter जिसमें we assign these values, and similarly we have a parameter जिसमें called as labels जिसमें we assign the values. So you can make it underscore 1 here. So it's not mandatory to give parameter name. Yeah, labels are not mandatory. You can just remove them. If you are clear कि ये किस लिए label है, you can remove the parameter name. They're good to go. Now, even if I execute this, I'm still able to see the output. So label names are not mandatory. Yeah. Clear हुआ आकाश? You could give this way as well. But order matters. पहले bins है, then followed by label. Okay, now what has happened here? Let me scroll down. तो यहाँ पे ideally हमारा क्या bucket था पहले 0 से 25 and what we asked for class A. तो ये तो हमारा binned column है जो हमारा पहले बना, right? And for that, is it not giving me the name? A second, why is it not giving the name? Okay, for label it is mandatory to define. Without label, why is it not considering?
Okay, it is mandatory, but ideally parameter names are not mandatory here. But when I'm removing this label keyword, I'm not getting the names just like I'm getting now. Oh, okay. So here what has happened? जो हमारी पहली category थी 0 से लेके 25. What was the respective class for that? So we have gotten class A, and similarly 75 से लेके 100. So 75 value belong to the range of 50 से 75. So 50 से 75 हमने क्या define किया label? Class C, right? Class C for 50 से लेके 75, and again class C, and where we have 100. So 100 किस में आ गया? तो 75 से लेके 100 वाली range में, and which belongs to our class D. So what we have, where we have a value of 100, it belongs to the 75 से लेके 100, and now we have the label as class D. 50 से again the value of 50 upper bound है, so it will belong to this circuit, lower circuit. So class B here for the value of 50. ठीक है, तो बस हमने क्या किया यहाँ पे, वैल्यूज थी, now we have given the label, and this is not mandatory. ये मैंने explanation part के लिए रखा है. Generally after doing the binning part and हम उसको categorize कर लेते हैं, we only work with this data, we do not pick this values. So this I have taken for explanation कि how the values have been grouped into the respective categories. कैसे we have gotten label name. So we generally work with these labels, not with these bins. Okay, so एक बार have a look onto the output and see that if you are confused at any point, that are the classes correctly classified or not. Just have a look. If you confused, just let me know. If then, good to go. You're getting only one column. This bend label. Have you defined this one? Assign the values of pd.cut जो इसका output आएगा for a new column. तो आपका you will get a bend column because the name we are giving is bend. And originally जो हमने previous command की उसमें भी हमारे column का name क्या था? It was bend. So giving the same column name, तो वो आपका जो existing column है that will override this column. So एक नाम है तो एक नाम से एक ही column exist करेगा. पहले ये था जो कि override होके now we have labels. Try give different name. So instead of bend, put up some different name. And also re-execute this command. ये command execute करो and then execute the label command with a different column name. क्योंकि same column होगा, then it will replace the existing bent column. अब हो गया आकाश proper getting proper answer? Or did I not send it to you? Sorry, it was there. I just forgot to put an enter. So is everyone clear with the output? Ki how this output has been defined and how we are able to categorize the values? Do you find this can be done using lambda function or one liner or if else? Do you find this can be done? One liner say to yeah, it can be done. So if I ask, can you all do it? Like, are you clear with that concept? Ki agar if you don't want to use pd.cut, then can you get this output using lambda function or one liners? ठीक है.
So it means you are all comfortable with that. Yeah, when we have more categories, जब these many or even more, then that will become complex. One line हमें use करना, but yes, अगर हम simple nested loop, for loop से regular for loop लगाए, then it will be easy. One line हमें थोड़ा confusing हो जाएगा. Okay. Now coming on to जैसे अभी by default क्या है? By default our lower value is excluded and upper value is included. लेकिन what if I want to include the only lowest value? See अभी जैसे 0 था, lowest value is what? Which is your starting value. So if and it is taken from the bin. So अगर for example मेरी data frame में 0 exist ही नहीं करता, जैसे for example into my score column the lowest value was 1, ठीक है, then it is okay, good to go with this bin, क्योंकि 0 से 25 हमने define किया है and 1 lies into this range, so it does not have any problem. लेकिन what if जैसे अभी हमारे पास 0 था and we have gotten a nan, right? So what if I only want to include 0, मुझे ये change नहीं करना, it's okay for me that you exclude lower values and it's okay for me that you include upper values. So I don't want to change that, but only one thing I want to change is that I don't want to have a nan here. मुझे जो lower value है, I want to include that as well. So उसके लिए we have one more parameter here. So that parameter name is include lowest. What it will do is it will include your lowest value. So here same thing, and I'm creating another column here. So okay, now the column name is, which I want to create, is binned labels, this new one. And also I'm rewriting my binned column so that nan ki jagah you get this range 0 to 25 defined, and I'm also rewriting my binned labels for that. Okay, so the only parameter what we have to define is let me put this ahead. So पहले हमने क्या किया, regular, the same, everything is same. यहाँ पे I'm not defining labels, I'm just only giving one extra parameter, that is include lowest is equals to true. So जब मेरा binned column define होगा, this particular column, so अभी तो हमने यहाँ पे we gave -5, so this 0 belong to that category. Now if I don't have that -5, so what will I do is, we got an and here, so in this case this lowest will belong to that 0 to 25 wali range, and to the respective binned labels I also given this extra parameter. Everything is still the same, yahan pe bin bhi diya, label diya, and just one other parameter, that is include lowest is equals to true. So by just executing this one single parameter into your data, okay, is it labels underscore 1, let me change that so that I don't have to change everywhere. Now you see what we have received. अब हमने जो binned column 25 will be still there. 25 is still belonging to that class A 0 से 25 वाली range. जब हम include lowest parameter is equals to true कर देते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारी starting value थी bin की, that was 0 से 25. So what it will do, it will decrease the value of 0 till -0.001. So equivalent to 0, but इस lower bound को थोड़ा extend कर दिया. It has just decreased this value of 0 to a certain extent, so that the change is not so much कि you get the different answer. So ideally हमारी bin क्या थी, 0 से 25. Now what is our bin? -0.001 till 25. 25 will be still included, upper values will be still included, लेकिन include lowest will only work for the lowest value, one lowest value. हर किसी के लिए नहीं करेगा, जो सिर्फ जो very initial value है, जो उसके लिए nan आया, it will only work for that. Now what we had here is 0. So now 0 belongs to class A because हमारा जो lower bound था
0 से शिफ्ट करके इट हैज बीन मेड एज -0.001. सो लोवेस्ट क्या करेगा, आपके लोअर बाउंड को चेंज कर देगा, वेरी माइनर चेंज बट केपेबल इनफ टू cater the value 0 here. That is the lowest value. And then now R0 is also defined into class A. Baki sab as it is, nothing has been changed. The only change for include lowest is equals to true is that your value, the lowest value for your very first initial bin got changed, and so as your category for class 0. So 25 still into my class A, 50 is still into my class B, and 75 is still into my class D, and 100 is still into my class D. वो सब चीजें as it is है, बस आपका जो ये बिन था 0 से 25 वाला, वो बिन 0 से हट के अब क्या आ गया है, -0.001. Only this has been extended towards negative so that 0 can be catered. So just the parameter is include lowest is equals to true. So your bin label has been also changed and the bin categories also has been changed. Any confusion here that if I just want to, can we call this binning process as a part of feature engineering? Feature engineering generally aman hota hai that we try to derive columns, multiple columns, या 2-3 columns we come up with one, that in combining 2 columns or performing certain operations on them. But yeah, you can call it as in like you are recoding your data. You're changing your data. That is, if these values are not acceptable and you want to recode it, so then you are just recoding it. Creating new features out of, yeah, you can say that, but yeah, you have created new feature from your columns code. आपने एक नया feature बनाया है using binning. So can be categorized as the feature engineering, because feature engineering is about creating new data from existing data by applying some logics. Okay. Any confusion here into this particular command and the respective output? Okay. Now coming on to the last functionality for this pd.cut is, now if I want to change their value, so अभी तक हमारा क्या होता था, lowest value was excluded and upper was included, लेकिन I want to flip it. I don't want upper values to be included and I want only lower values to be included. So just another parameter here is right is equals to false. And one more thing here, with right equals to false, your include lowest will not work. Because जब हम बोलते हैं include lowest, तो क्या हो गया, हमारी value change हो गई. And when we say right is equals to false, so what will happen? जो अभी हमारा 25 क्या था क्लास ए में, upper value was included. जब मैंने बोला right is equals to false, then your 25 will not be included. Automatically जो आपकी lowest value है उसको preference दिया जाएगा. Then there is no point of doing include lowest is equals to true. क्योंकि include lowest we did at what point? When the lower value was not included, right? लेकिन अगर हम lower value को include ही कर रहे हैं, then will this make any sense? Clear हुआ why with right is equals to true include lowest will not make any sense? So generally this is included and this is excluded. जनरल जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, जब हम बोलते हैं इंक्लूड लोवेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, तो जो ये वाली वैल्यू थी हमने किस लिए दिया, ताकि जो ये लास्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू थी ये इंक्लूड हो जाए, राइट? इस कमांड का यही काम था कि लोवेस्ट वैल्यू इंक्लूड हो जाए, ऑल्दो द वेरी फर्स्ट वैल्यू, लेकिन जस्ट टू इंक्लूड दिस वैल्यू एज वेल. जब हम बोलते हैं राइट इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो व्हाट विल हैपन, square bracket will come on the left hand side and round will come on the RHS. So now upper bound is excluded and lower bound is included. तो जब ये automatically 0 include ही हो गया, then there is no purpose for this one, क्योंकि ये क्या करता था,
it was because there was a round bracket here, it was excluding it, तो range change कर देता था. But when जब हम next parameter हमारा right is equals to false, वो automatically आपके lower bound को cater करेगा. So don't have to extend the value of lower bound just like this one, because this was in the case when it was excluded. Now this is included, so there is no need for this value increment or decrement. So clear कि why include lowest will not be done when we say right is equals to false. So when we say right is equals to false here, जैसे यहाँ पे क्या right is equals to false, so in that case we will not give include lowest. Clear? So we are here, we'll just keep bin, we'll keep only right is equals to false and label. यहाँ पे हम include lowest वाला पैरामीटर नहीं लेंगे. ठीक है. So I've just created two more columns. ये तो हमारा regular binning वाला था जिसमें lower value was excluded and upper was included, and ये इसके respective classes थी. So this is one complete output. Now जब हमने बोला है right is equals to false, these are my respective outputs. यहाँ पे हमने क्या बोला, right equals to false and store किया binned labels n में, and this is bin n. So they are all together. Now you see what we are having, square bracket on the left hand side and round bracket on the upper hand side. So 50 जो ideally the 25 value, we are still looking for the value 25. Now you see the change here. 25 which was ideally belonging to this 0 to 25 value range and was into that class A. Now what has happened here, 50 is excluded and it will become the lower bound for what, this particular range 25 से लेके 50. So now it has come out to be the part of 25 से लेके 50 bin, and so as belongs to class B. And 100 which was belonging to class D, because 100 क्या था, upper value थी, included था, so class D define हुआ. लेकिन in the new category right is equals to false, upper value is excluded, so what we have gotten, we have gotten nan for 100. जो 75 value थी was belonging to class D, because 75 was upper bound to class C. Now it is belonging to class D of range 75 से लेके 100, because now it is included and 100 is excluded. Got to see the changes? By just specifying right is equals to false, your complete output will change, because then your bin definition is changed. Now you're including the lowest value and excluding the upper bound. तो आप वो flip कर दिया आपने, and so उसके जो respective categories थी वो भी change हो गई. Just have a look, एक बार answer को देखो and look at the bins and just have a link कि समझ में आ रहा है या नहीं. If still confused, then just let me know. Ideally जो मेरी bin थी 0 से 25 was into that category. Now it has been flipped. Send in your command, Komal. Yes, इसमें आप value exclude हो जाएगी आकाश. So p.cut bin 1, ठीक है, right is equals to false, ठीक है, p.cut so bin label. Execute this command, Komal. I don't see any error into your command.
100 को इंक्लूड करना हो तो नो. When you say right is equals to false, एक चीज will be left out. Either you allow into bidding part, you फिर आप अपनी जो custom range है उसको redefine कर लीजिए ना. So why just to give, अगर if you want to include everything, then just put this range to 1000. Redefine your bins in that case. What was going on then? आपका भी सेम ही था DF score. I think the parameter alignment was the issue. क्योंकि आपने क्या दिया था, लेब, it is below. आपने I think, but it should not. एक second, let me see. Where is your code? So you gave labels prior. So I think this was the issue, because there is a particular um, place for a, yeah, no. I don't know what was wrong into your code then. Yeah, I don't know what went wrong. अभी आपका हो गया, ठीक है. Okay, so any confusion, anyone into the binning part? How do you make bucket? इसको binning बोल देते हैं या bucketing बोल देते हैं? Any confusion here? सबको क्लियर हुआ? हार्दिक, सोनिया, कृष्णा. Okay, no confusion to anyone? Okay, so we काम करते हैं. It's 9:18, so let's have a break, 5 to 6 minutes. अच्छा, you didn't put label. Okay. Okay, so ठीक है. Now let's have a break and we shall resume at, it's 9:20, so we'll resume at 9:25. Fine. So we'll start with then merge and concatenation, because binning हो गया हमारा. Binning just have these things, so then we shall start with binning. Okay, so let me just leave a note here. 9:25. Is that okay, everyone? Um, okay, so let's have a break, guys.
Okay, is everyone here? हाँ जी. Okay, हाँ. One important thing to discuss with everyone. अभी जैसे यार क्लासेस हाँ जी सभी है यहाँ पे या नहीं है बिफोर आर यू ऑल हियर ओके सो अभी यार क्लासेस आर 8 to 10 so abhi I'm having an emergency ki I won't be like after mujhe kuch I'm consumed after 9 some sort of family problem तो एक आर की मुझे प्रॉब्लम है सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एंड आई डोंट वांट कि आप लोगों का लीव हो बिकॉज आई एम रियली नॉट एबल टू मैनेज विद दैट थिंग तो मैं उस टाइम पे नहीं अवेलेबल हो पाऊंगी फ्रॉम 9 to 10 एंड आई डोंट वांट ईदर कि आप लोगों का सिलेबस अभी बीच में कुछ दिन के लिए छुट्टी हो आई डोंट वांट ईदर दैट so I'm having these slots available so you can choose any like जिसमें आप सब agree हो or any other slot but like after 1:30 and before 9 so उसके really उसके बीच में I'm really consumed मैं उसमें not able to do anything so so as per all of you say like are you comfortable with any you pick any of the slot I'm fine with that but really sorry for 9 to अभी emergency है so I hope you understand उसमें नहीं कर पा रही हूँ मैं so any slot you comfortable I'm okay with that yeah if you are comfortable on the weekdays it's about 8 weekends so if you're not अगर आप comfortable हो weekdays के लिए कि instead of weekend weekdays में at any time so if you're not आप नहीं निकाल पा रहे हो आपकी बैंडविड्थ नहीं है on the weekend weekdays पे कोई भी टाइम like दो हम क्लासेस वीकडेज में रख ले एनी टाइम विच यू ऑल आर कंफर्टेबल विद so 7 to 9 Krishna and Mahima are help good Anshula is also good for Anusha okay Aman ठीक है 5 morning time is good so are you all comfortable with 7 to 9 thank you so much yes in morning 7 to 9 शाम का नहीं है आकाश अगर आपको शाम को करना है 7 to 9 I'm okay with that as well if you अगर if you find that too early and you are available at night I'm okay with that अच्छा ठीक है ठीक है okay so everyone is okay with 7 to 9 thank you so much guys thank you okay then अभी तो नहीं so only one more week uh, um, Saturday Sunday ही this is for Saturday Sunday if you want me कि हम weekdays पे करें and you all are available then I'm okay with everything as long as you all are comfortable with that but मुझे अभी problem है वो after 9 में भी problem है तो मैं उसमें नहीं आ पाऊंगी ये मैं दामिनी से I'll contact and maybe from next weekend या next to next weekend weekdays 7 to 9 कृष्णा इज सजेस्टिंग अच्छा वीकेंड 7 to 9 ओके ठीक है सैटरडे संडे कर लेंगे एंड 7 to 9 बैच ठीक है ठीक है यार जल्दी उठ पाएंगी ये बेटा फिर रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा ओके देन अगर वीकडेज के लिए आप सब कंफर्टेबल हो देन आई डोंट हैव प्रॉब्लम फॉर वीकडेज एज वेल it's only this is for now weekend लेकिन if you want to have classes on weekdays तो I'm comfortable with weekdays अगर आप सबके पास bandwidth है Saturday Sunday is fine okay then okay weekends are fine with everyone so
maybe next week या next to next week we'll start from 7 to 9, और हम next week से कर लेंगे, आज का तो हो गया. So from next class we'll have from 7 to 9. ठीक है? Thank you so much everyone for the support. Thank you. Okay. चलो वापस क्लास पे आते हैं. So this all is gone. Good to go. या थोड़ा बहुत फैमिली में कोविड चल रहा था, थोड़ी बहुत है लुक आफ्टर करना आफ्टर, सो दैट इज व्हाई अब थोड़े इश्यूज आ गए. ओके, बट रियली थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट. Okay, now coming back to merge and concatenate. Let me share that screen. Okay, let me do this thing as well. Let me share this because I think it's too much of coding into. Or see, not much here. I'll share the data frames and this part I'll share with all of you. Okay. Now coming on to merge and concatenate. Merge, concatenate and join are the functionalities just like SQL. जैसे SQL में होती है वैसे ही similar है. So we'll start with merge. ठीक है, merge. Let me just. I'll send the image later on. Meanwhile, picture कैसे add हो गई? Okay. I'll tell you. Let me first of all send these to you. Then I'll tell you how you can add pictures. So once you create your cell as your markdown cell, for example, execute किया, इसको भी execute किया. So pictures के लिए what you have to do is, जैसे now what this cell is a markdown cell. Now go to edit, and in the bottom you will find go to edit, and in the bottom, why my screen is not going down? In the bottom you find insert image. अभी तो because this is not a markdown cell, so I need to go to a cell. जैसे अभी ये markdown cell है, right? So now I scroll down here and you see what I'm got an option, insert image. So when I do that, I get a path. I'm allowed to choose a file and just select that particular folder where you have your files, and then you can just access them. But that cell has to be a markdown cell, and then choose the particular file by just browsing to that path, and then you will be able to insert that image. Okay, I'll share this image with you, so it will be easy for you to understand. And then once that image is inserted, it will be in such form, and then just do a shift enter, then you just straight away get the output. Okay, so images के लिए markdown cell पे, and then only आप markdown cell के time पे insert करा सकते हो. If your cell is into a code execution state, तो insert image will be it will be in without, it will be in dormant stage, तो वो नहीं execute होगा. Okay, let me send these as well. These are the theory parts. So theory for understanding बाकी मैं समझा दूंगी. Yeah, कोड में नीचे तो ज्यादा कुछ नहीं है, although but yeah, a lot of copy pasting. Yes. Okay, let me send these images as well. Let me send the complete one. Give me a second.
Just one more second. I'm just checking the images. Then I'm done. Okay, I've sent you the mail. Please check your mail IDs. Abhi sent you in the name. With the subject of merge and concat. Along with the images, I've sent the code. हाँ जी, everyone received? Is there anyone जिसको नहीं मिला हो? Yes, Prem, it's not. Let me just send it to you. I sent you, Prem. ठीक है, has everyone received the mail? Is anyone there who has not received? Okay. So once everybody is on the same notebook, just let me know, then we can start the explanation part. Is everybody on the same notebook? Shall we start? Okay. So this is about merge and concat. Merge हमारा और you can say join हमारा चार तरीके से होता है into pandas. SQL में भी ऐसे ही होता है. So it's about inner, outer, left and right. So this image explains that very well. So जब for example this is my data 1, this is my data set 2. And in case जब मुझे and generally हमारा ये merge concatenate कहाँ use होते हैं where you have different data sets. जैसे talking about टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर ये जो ऑनलाइन जैसे अमेजोन है उसके मल्टीपल कैटेगरीज है वन कैटेगरी holds the record for kitchen appliances, home appliances. The another category holds the record for women clothing. The other category records for men clothing. तो हमारे पास multiple categories हैं. So if assuming don't know what is in the backend,
तो अज्यूमिंग कि हर कैटेगरी का एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन है कि जो जो वुमेन क्लोथिंग पे आते हैं उनका एक अलग कस्टमर बेस है, जो किचन होम अप्लायंसेस पे आते हैं उनका अलग कस्टमर बेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स पे आते हैं उनका अलग कस्टमर बेस है. सो इफ Amazon और एनी अदर प्लेटफॉर्म वांट्स टू विजुअलाइज कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स डू आई हैव इन exact numbers, maybe one customer is also in my kitchen and home appliance, one customer is also into my women clothing and also into my gadgets and electronic item. So I just want as a whole ki individual single unique customer. So in that case, what will happen? We do the merge and join operations. So ये क्या करेगा? And this is my database one. This is my database one. This is my database two. So talking about left join या left merge, ये क्या करेगा? This is from gadgets and this is from women clothing. So I just want to know कि okay, from women clothing and from gadgets. I just want to know those customers जो women clothing में भी हैं और मेरी gadget में भी हैं. So I'm giving priority to my gadgets. और you can see जो customers मेरे gadget वाले section में भी enrolled हैं and जो women clothing में भी enrolled हैं. So you could see this is the correct definition that all those customers who have made their records और जिनके record मेरे पास gadget में है ही है and also they have made their account into women clothing part. So what will happen? This is a left join. तो इसमें हमने किसको priority दी? The people who are into gadget section, but वो women's वाले section में भी they have enrolled into, right? So they will come under those category. So इसमें हम we are prioritizing our category one, which is database one. ठीक है? समझ में आया नहीं आया with this example? और फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लीजिए that these are two classes, class 1 and class 2. This is my class 1 and this is my class 2 and मुझे एक नई क्लास बनानी है. I want to see कि students from my class 1 who are also enrolled into my class 2. So मुझे सिर्फ वो चाहिए कि जो मुझे सिर्फ class 1 के student चाहिए. I don't want students from class 2. I only want class 1 students जो कि class 2 में भी हैं. मुझे क्लास 1 के साथ साथ वो वाले भी चाहिए कि जो क्लास 1 में भी हैं और क्लास 2 में भी हैं. सो दैट विल मेक योर लेफ्ट जॉइन. बिकॉज इसमें आप क्या बोल रहे हो कि आपको क्लास 1 तो चाहिए, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू, बट along with that जो क्लास 1 वाले स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 2 में भी एनरोल्ड हैं, so they will be, so they will come under this category. So जो क्लास 1 वाले स्टूडेंट वो तो है ही है क्लास 1 में, लेकिन क्लास 2 में भी एनरोल्ड है. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एरिया? ये क्लास 2 का एरिया है, बट this green, this is the portion where class 1 वाले student have gotten into class 2 also. So what left join will do is we are prioritizing, हम class 1 को importance दे रहे हैं, लेकिन along with that हम वो students भी ले रहे हैं कि जो class 1 में ना, और like not only into class 1, we are also asking कि जो class 2 में भी हैं, we are also selecting them. So that will be done under left join. Under the right join, what will happen? Again, my class 1 and class 2. Now we are giving importance to the student of class 2. So now I'm saying कि जो students मेरे class 2 में हैं and along with that also enrolled into my class 1. जो class 2 में थे mandatorily, अब इसमें हम किसको importance दे रहे हैं? Students from class 2 and also enrolled in class 1. So class 1 ideally is still here, लेकिन my class 2 students are also enrolled into my class 1. So which are the students? These which are also enrolled in, ये although class 2 के students है लेकिन ये class 1 में भी enrolled हैं. So then I will have to perform a right join. इसमें I'm having two databases, two classes, class 1 and class 2. Class 1 is my left data and class 2 is my right data. When I'm prioritizing my class 1, that is मुझे वो students चाहिए जो class 1 में हैं और साथ साथ class 2 में भी enrolled हैं. तो it means मैं किसको priority दे रही हूँ? Class 1 students को. Then it means I'm performing left join या left merge. When I'm prioritizing class 2 की, I want those students which are into class 2 for sure. मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए. लेकिन along with that, all those students which are also enrolled in class 1, जो class 2 में थे लेकिन class 1 में भी enrolled हैं. So I'm giving priority to which data frame? Onto my right. So into this case, I will perform a right join or a right merge.
because I want the output from class 2. Class 2 is my right data frame. दो data frames पे हमेशा right concat merge होगा. So आप order में अगर आप पहले अगर आप पहले data frame 2 लिख दोगे, now for example if I flip them, अभी द ऑर्डर जो मैंने आपको समझाया उसमें द ऑर्डर इज दिस, पहले आपका है क्लास 1, देन इज योर क्लास 2. नाउ एज पर द ऑर्डर गिवन हियर, दिस इज योर लेफ्ट डेटा एंड दिस इज योर राइट डेटा. जब हम लेफ्ट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज मुझे लेफ्ट डेटा का हर रिकॉर्ड चाहिए अलॉन्ग विद कि जो लेफ्ट वाला डेटा वो राइट में है या नहीं है, देन आई विल परफॉर्म अ लेफ्ट जॉइन व्हेन आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू माय लेफ्ट डेटा. When I'm giving importance to my right data, that is to कि जो students class 2 में हैं and also enroll into class 1, these students. So this is particular all the data. So इसमें मैं किसको importance दे रही हूँ? Right data frame को. Then I'll do my right join here. So it depends. If I give 2 here and if I give 1 here, and now this becomes my left data frame and this becomes my right data frame. It all depends कि आप पहले कौन सा लिखते हो. Your operation will change as per that. Now when I'm saying कि I want all the students from class 2 which are also enrolled into class 1. So again this is अब इसमें everything is performed by this left and right. जो भी आपका left join होगा, जो भी आपकी position left पे होगा, and when you are giving importance to that, then आपकी left join में be it class 2 or class 1. इट कैन बी एनी, क्लास 2 है या क्लास 1 है, तो लेफ्ट पोजीशन पे जो होगा दैट विल बी गिवन इंपॉर्टेंस. एंड अलोंग विद दैट अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्लास 2. सो जो स्टूडेंट्स क्लास 2 में थे एंड आर ऑल्सो इनटू माय क्लास 1, सो विल परफॉर्म अ लेफ्ट जॉइन हियर. नाउ दिस डेटाबेस बिलोंग्स टू क्लास 2, जो कि आइडियली हमारी पहले वाली सिनेरियो में किसको बिलोंग करता था? 1 को, क्योंकि हमने लेफ्ट पोजीशन पे किसको लिखा था? 1 को. नाउ हमने लेफ्ट पोजीशन पे हमने किसको लिख दिया? 2 को. So now this database will belong to the students of class 2, and now we are looking here कि जो students मेरे class 2 में हैं and also are enrolled into my class 1. So give me those list of students which are also in my class 2 and class 1. So then we are doing a left join. Clear हुआ? So order matters. जो आप data frame left पे लिखोगे, पहले लिखोगे, that will be taken as your left data frame. The data frame which you write after, that will be considered as your right data frame. So आपका लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन और राइट मर्ज विल डिपेंड कि आप यहाँ पे कौन सा डेटा फ्रेम दे रहे हो. अगर आपने पहले 1 दिया, देन इसमें लेफ्ट जॉइन में योर 1, द डेटा फ्रेम 1 विल बी गिवन प्रायोरिटी. अगर यहाँ पे आप 2 लोगे, देन डेटा फ्रेम 2 विल बी गिवन प्रायोरिटी. इट डिपेंड्स कि आप कौन सा डेटा फ्रेम पहले लिखोगे, देन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉइन और मर्ज, दैट डेटा फ्रेम विल बी गिवन प्रायोरिटी. So left join, right join, or you can also call it as merge. क्लियर हुआ या कंफ्यूज्ड हो? सबको क्लियर है? ठीक है. नाउ दिस वाज लेफ्ट एंड राइट, जहां पे हमने प्रायोरिटी दी कि मुझे क्लास 1 या क्लास 2, जो भी हमने प्रायोरिटी दी, बाय डिफॉल्ट क्लास 1 एंड 2 लेते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू आउटर जॉइन एंड इनर जॉइन. इनर जॉइन क्या करेगा? हाउ डू वी डिसाइड? दैट इज अप टू यू कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए. अगर आउटपुट में आपको क्लास 1 के स्टूडेंट्स चाहिए, यू वांट ओनली क्लास 1, देन आप लेफ्ट में क्लास 1 को रखोगे. अगर आपको आउटपुट में क्लास 2 के चाहिए, दैट यू ओनली वांट क्लास 2, देन एंड यू वांट टू परफॉर्म अ लेफ्ट जॉइन. वो डिपेंड करता है कि आपको, अभी जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए. एंड ऑल्सो इवन इफ यू कीप द सेम ऑर्डर, आप पहले 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, देन यू कैन चेंज द जॉइन एज वेल. अगर आपका ऑर्डर 1 एंड 2 है एंड यू वांट टू गेट द आउटपुट फ्रॉम 2, आपको क्लास 2 चाहिए, देन यू परफॉर्म अ राइट जॉइन. सो डज नॉट मैटर इवन, बट यू हैव टू नो कि आपका लेफ्ट डेटा फ्रेम कौन सा है, राइट डेटा फ्रेम कौन सा है. देन एज पर योर रिक्वायरमेंट, देन यू कैन ऑल्सो चूज कि अगर आपको राइट, दैट इज क्लास 2 का आउटपुट इंपॉर्टेंट है, then you will perform a right join. अगर क्लास 1 का आउटपुट इंपॉर्टेंट है, then you will perform a left join. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू आउटर एंड इनर. अगर मुझे चाहिए कि ओनली आई वांट दो स्टूडेंट्स, सो दिस इज, यस, दिस इज इंटरसेक्शन कि दिस वाज माय क्लास 1 एंड दिस इज माय क्लास 2. सो आई वांट ओनली दो स्टूडेंट जो दोनों क्लास में एनरोल्ड है. मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए.
आई वॉन्ट द इंटरसेक्शन की जो क्लास 1 में भी है और जो क्लास 2 में भी है, देन आई विल परफॉर्म इनर जॉइन कि जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं इन द बोथ क्लासेस, then inner join what will do, it will pick up these both classes and it will give me the result कि जो दोनों classes में students common है, जो class 1 वाले 2 में enrolled है और जो class 2 वाले 1 में enrolled है, तो common हुए, दोनों classes में enrolled है. So this will be my output of inner join, that is I'm having common students from both the classes. So जब आपको कुछ ऐसा रिजल्ट चाहिए कि आपको कॉमन ही देखना है कि क्लास 1 और क्लास 2 में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों क्लासेस में एनरोल्ड है, सो इन दैट केस यू विल परफॉर्म एन इनर जॉइन. एंड व्हेन इन सिनेरियो यू वांट एवरी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 1 में एनरोल्ड है, चाहे क्लास 2 में एनरोल्ड है या दोनों क्लास में एनरोल्ड है, इट डजंट मैटर टू यू, you want each and every student, you want a complete record, so in that case you will perform an outer join. So here class 1 is also taken into consideration, class 2 is also taken into consideration, and the common students are also taken into consideration. So in total आप सभी students को consider कर रहे हो. So in that case when your complete record is given out as your output, that is the case of outer join. When only common record from the two databases as is given your output, then that is your inner join. It is an intersection and it is a union. ठीक है. When the data frame or when the record from your only data frame which is at right position is given out or given priority, तो उस केस में हम right join करेंगे. And when we give priority to the left data frame जो हमने left position पे रखा है, then we perform a left join or left merge. ठीक है. So these are 4 different type of merge. ये SQL में भी यही होता है और pandas में भी, sorry Python में भी यही होता है. So left join और left merge, join and merge pandas में ज्यादा difference नहीं है, same functionalities, but merge में आपको ज्यादा commands, ज्यादा functionality available है as compared to join. Join में कुछ गिनी चुनी चीजें allowed है, wherein merge you have multiple things allowed, but both will do the same thing. Join भी आपका वही चीज करेगा, merge भी आपका वही चीज करेगा. Okay. So is it clear? Left join, right join, inner join, outer join. Any confusion here? एक बार go through समझ के देखो दोबारा से as per the image, and if confused just let me know. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, I'll just straight away come to the images. For example, taking this image into consideration, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, लेफ्ट मर्ज. इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. So here this is my left data frame, you can call it 1 and you can call it 2. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे परफॉर्म करना है लेफ्ट मर्ज. तो एक तरह से मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट्स विच आर इनटू माय डेटा फ्रेम 1 but also into my data frame 2. ठीक है. And into this case it will look for the indexes. So यहाँ पे हम merge किस कॉलम पे कर रहे हैं, where we will look for the ID column कि जो स्टूडेंट्स जिनकी ID क्लास 1 में भी है and same स्टूडेंट्स जिनकी ID क्लास 2 में भी है, तो ID will be always 1. तो क्लास 2 में भी वही ID है और क्लास 1 में भी वही ID, तो कॉमन स्टूडेंट्स हो गए. सो इस केस में हम परफॉर्म कर रहे हैं लेफ्ट मर्ज. सो लेफ्ट मर्ज में इट मीन्स वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द क्लास 1 कि जो स्टूडेंट्स क्लास 1 में भी थे और क्लास 2 में भी एनरोल्ड है, सो गिव मी द रिजल्ट्स बेसिस ऑन दिस आईडी. सो आईडी हमारी कौन कौन सी है, 1, 2, 3 एंड 4, एंड दिस इज माय क्लास 2. तो क्लास 2 में हमारी आईडी कौन सी थी, 3, 4, 5 एंड 6. सो 5 एंड 6 रिकॉर्ड हमारी क्लास 1 में नहीं है. ओनली रिकॉर्ड विच मैचेस आर 3 एंड 4. क्लास 1 एंड 2 एंड 3 एंड सॉरी रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4. 3, 4 इसमें है, 1, 2 इसमें नहीं था, बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मर्ज कर रहे हैं, सो वी विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन बिकॉज वी आर डूइंग अ लेफ्ट मर्ज. सो ये रिकॉर्ड तो रहेगा ही रहेगा. एंड along with these two we are also looking कि if that record is also present in my class 2. so ये class 2 में 2 instances थे, so I will get this also as my output. तो मेरे output में क्या आ जाएगा, I will have this as my output 1 से लेके 3, 4 and I will have NaN values here because with respect to these row 1 and 2 यहाँ पे कोई instances नहीं थे, तो null value आ जाएगी. blank है तो blank नहीं होता, Python में null होता है. so we get a null value here and यहाँ पे all the records were existing
तो इसके आउटपुट में we'll have such kind of data frame, that is 1 row 2 and row 3 4 from both the data frames. So this is your left merge. यस, मैचिंग कि जो डेटा फ्रेम आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है वो राइट में भी प्रेजेंट है तो आउटपुट दे दे। इन केस ऑफ लेफ्ट मर्ज मैचिंग हो रही है ऑन आईडी कॉलम। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये मैं इसका आउटपुट दिखाई देती हूँ आपको। आई एम टेकिंग द सेम डेटा हियर। सो दिस वाज आवर डेटा एज सेम एज पर द इमेज, जो मैंने अभी इमेज आपको समझाई उसी में। आईडी कॉलम 1 2 3 4, लेफ्ट आई हैव रिटन 4 टाइम्स। आई होप ये डेटा फ्रेम कैसे बना इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डुप्लीकेसी, उसको रिपीट कर रहे हैं 4 टाइम्स एंड जनरेटिंग एन आईडी कॉलम। डेटा फ्रेम क्रिएशन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो हम अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से डेटा फ्रेम है, लेफ्ट एंड राइट। हमने 2 डेटा फ्रेम बनाए हैं। राइट वाले डेटा फ्रेम में सभी एंट्रीज है राइट के नाम से, लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में सभी एंट्रीज है लेफ्ट के नाम से। नाउ हमें अब मर्ज करना है, लेफ्ट मर्ज एंड ऑन टू माई कॉलम आईडी। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द कमांड। See, this is the syntax when we perform a merge command. So सबसे पहले आएगा pd is my pandas dot merge is my function. किनको मर्ज करना है, मुझे लेफ्ट अंडरस्कोर 1 वाले डेटा फ्रेम को मर्ज करना है विद राइट अंडरस्कोर वाला 1 डेटा फ्रेम। सो दिस इज माय लेफ्ट अंडरस्कोर 1, दिस इज माय राइट अंडरस्कोर 1। कौन से कॉलम पे मर्ज करना है, विल कम अंडर ऑन। ऑन इज योर कि आपको किस कॉलम पे मर्ज परफॉर्म करना है। सो मुझे परफॉर्म करना था आईडी पे, सो ऑन में क्या आया, आईडी। एंड हाउ स्पेसिफाइज कि आपको कौन सा, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। सो हाउ में आपकी 4 वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, लेफ्ट। सो जब हमने दिया लेफ्ट, तो व्हाट इज माय लेफ्ट डेटा फ्रेम, लेफ्ट अंडरस्कोर 1। इट मींस आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस लेफ्ट अंडरस्कोर 1। ये सभी वैल्यूज आएंगी एंड अलोंग विद दैट जो वैल्यूज मेरी डेटा फ्रेम लेफ्ट में थी 3 and 4 एंड जो राइट डेटा फ्रेम में भी है, सो दीज वैल्यूज। सर जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि कॉमन है लेफ्ट में भी और राइट में भी, अलोंग विद लेफ्ट का सभी रिकॉर्ड केटर होगा, बट ऑल्सो कॉमन वैल्यूज विल बी टेकन आउट फ्रॉम राइट डेटा फ्रेम। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कमांड, दिस इज आवर रिस्पेक्टिव आउटपुट। 1 and 2 के मैचिंग में, एज वी सी इन द इमेज, देयर वाज नो डेटा बिकॉज राइट डेटा फ्रेम की इंडेक्सेस कहाँ से है, 3 से लेके 6 तक। सो 1 and 2 के लिए कोई मैचिंग नहीं मिला। मैचिंग किसके लिए मिला, बस 3 and 4 के लिए। सो 1 and 2 के लिए हमारे पास क्या आ गया आउटपुट में, नैन। एंड 3 and 4 के लिए मैचिंग मिला, तो व्हाट वी हैव गॉटन, राइट फॉर बोथ द प्लेसेस। एंड लेफ्ट इज एज इट इज। सो लेफ्ट वाली डेटा फ्रेम का वी डिड नॉट लूज एनी डेटा, whereas राइट वाली डेटा फ्रेम में जहां पे मैचिंग नहीं हो पाई, वी गॉट नैन। एंड जहां पे मैचिंग हो पाई, वी गॉट दोज पर्टिकुलर वैल्यूज। बट हियर लेफ्ट डेटा इज गिवन इंपॉर्टेंस बिकॉज हमने कौन सा मर्ज परफॉर्म किया है, लेफ्ट। सो जो आप मर्ज परफॉर्म करेंगे जिस तरह का, दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पे हमने इसको कंसिडरेशन किया। So you see we have this complete data frame as it is. Nothing is lost from this one. Data is lost from the right one because हमने merge perform किया left. So our importance was to this one, not to the right one. So जहाँ पे matching हुई right के वहाँ पे records आ गई, जहाँ matching नहीं हुई we have gotten none. Clear हुआ? अब left merge. Any confusion onto the left merge part? इंडेक्सेस, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन कि आप जिस कॉलम पे मर्ज परफॉर्म करोगे, अगर वो मैचिंग है तो आउटपुट आ जाएगा, मैचिंग नहीं है तो नैन आ जाएगा। एंड डिपेंड्स कि आप कौन सा मर्ज करा रहे हो, लेफ्ट करा रहे हो तो लेफ्ट वाले को इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट करा रहे हो तो राइट वाले डेटा फ्रेम को इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, सो मैंने आपके साथ ये फाइल शेयर की है, एक बार गो थ्रू करना। बहुत मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज इजी एज आई कैन, तो समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया है। पैरामीटर्स वी हैव टू मेंशन इन द फंक्शन, which parameters frame, ये सब on and how, yes they are mandatory because इन्हीं की बेसिस पे आपका मर्ज होगा ना, कि आप बताओगे मुझे इस कॉलम पे करना है, मुझे इस वाले डेटा फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है। सो ऑल दिस एंड डेटा फ्रेम, ये वाला मेरा लेफ्ट है, ये वाला राइट है, सो दे आर मैंडेटरी। विदाउट देम आपका मर्ज बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, देन इफ यू डोंट स्पेसिफाई दिस देन बाय डिफॉल्ट चलेगा, लेकिन we perform either left right, so they are mandatory in this case.
ठीक है. So I've shared this file with all of you. एक बार go through करना. मैंने easy से समझाया है, but still if you feel confused, so I'll cover that as well. ठीक है. And then we'll be able to complete this in the next class. Okay. So go through करना. इसमें concatenation भी I've covered and merge as well. So just have a look, and if you feel confused, then we'll just हम समझेंगे next class में इसको. Okay. So next class 7 to 9, and we'll be doing the merge one. Otherwise, अभी आज के लिए any questions, any doubt anyone is having? आज की क्लास में जितना हमने किया उसमें any sort of confusion in any of the command? Okay. Yes, I had a word with Damini Prem. So we came to a solution. So you just can coordinate with her, and we'll have a discussion over the phone. So एक बार I'll call you, or you can call me, or we can have a conference over the call with Damini. So we came to a solution, and let's see we can do it or not. Okay, I had a word with Damini for that. Okay. So आज के लिए thank you so much everyone. So have a good time and be happy and be safe. Okay. So thank you so much everyone. Thank you. Thank you. So signing off everyone. Bye everyone.